Hi, my name is BILAL KASHIF and you're watching iExpert 360 Introduction to Computer Networks Day 11 training series, and the topic is what is Open Shortest Path First Protocol or OSPF protocol. So before diving deep into the concepts of OSPF, let's just recap our Day 10 ट्रेनिंग सीरीज़. तो Day 10 की ट्रेनिंग सीरीज़ में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम एक ही राउटर के अंदर रिप और स्टैटिक राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ताकि एक प्रोटोकॉल हमारा प्राइमरी या एक्टिव के ऊपर हो और एक हमारा बैकअप के ऊपर हो. और आज हम देखने जा रहे हैं कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल या OSPF क्या होता है. So these are the topics: introduction to OSPF, different router types in OSPF, what are the different OSPF messages and timers, what are OSPF terms, how neighborship in OSPF is formed, what are OSPF states, advantages of OSPF, and then conclusion. So let's start. What is OSPF? Open Shortest Path First. Open Shortest Path First (OSPF) is a link state routing protocol which is used to find the best path between the source and the destination router using its own shortest path first (SPF) algorithm. OSPF divides a bigger network into multiple areas. A link state routing protocol is a protocol which uses the concept of triggered updates. If there is a change observed in the learned routing table, then the updates are triggered only, not like the distance vector routing protocol where the routing table are exchanged at a period of time. OSPF क्या है? बेसिकली ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है SPF के एल्गोरिदम को देखते हुए. और OSPF में हम एक बड़े नेटवर्क के स्मॉलर एरियाज़ बना देते हैं और उनको जो है ना हम एरियाज़ में इसको डिवाइड कर देते हैं. और OSPF ट्रिगर्ड अपडेट डाल देता है. हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी रिप के अंदर कि जो हमारा राउटिंग टेबल होता था, एक राउटर दूसरे राउटर को पूरे का पूरा नेट अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता था, जबकि इसके अंदर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है सिर्फ वही अपडेट आगे फॉरवर्ड की जाती है. पूरा का पूरा राउटिंग टेबल इसके अंदर अपडेट नहीं किया जाता. Open Shortest Path First is developed by Internet Engineering Task Force (IETF) as one of the Interior Gateway Protocol (IGP). The protocol which aims at moving the packet within a large autonomous system or routing domain. It is a network layer protocol which works on the protocol number 89 and uses AD value 110. OSPF uses multiclass address 224.0.0.5 for normal communication and 224.0.0.6 for update to designated router DR और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर BDR. अब ये DR क्या होते हैं और BDR क्या होते हैं, ये हम फर्दर जाके जब हमारे पास OSPF में राउटर टाइप्स हम देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि DR क्या होता है और BDR क्या होता है. So the next is, what are different router types in OSPF? There are 4 types of OSPF routers which are determined by router functions and or location within an OSPF area. Internal IR. All OSPF interfaces must belong to same OSPF area. Backbone router. At least one OSPF interface must belong to area 0 backbone area. अच्छा, ये जो IR हो गया या बैकबोन हो गया, ये जब हम लैब करेंगे, ये आज की जो ट्रेनिंग है ये प्योरली थेरेटिकल है, इसके अंदर कोई लैब नहीं है, लेकिन ये थ्योरी जानना ज़रूरी है लैब करने से पहले. इसलिए मैंने एक सेक्शन रखा है इसके ऊपर, थ्योरी के ऊपर. नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एरियाज़ की जब एक लैब बनाएंगे तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि IR कौन सा राउटर है इस टोपोलॉजी के हिसाब से, BR कौन सा है. एरिया बॉर्डर राउटर ABR.
At least one OSPF interface must belong to area 0 backbone area, and at least one OSPF interface must belong to a non-backbone area 0. Autonomous System Boundary Router ASBR, an OSPF router that performs route injection redistribution from one route source RIP, EIGRP, ISIS, BGP, another OSPF process, etc. You can use the show IP OSPF XZ command to identify which OSPF types your device is currently configured as. So the next topic is, what are different OSPF messages and timers? OSPF uses certain messages for the communication between the routers operating OSPF. Hello message. These are keep alive messages used for neighbor discovery or recovery. These are exchanged in every 10 seconds. This include following information: router ID, hello dead time interval, area ID, router priority, DR and BDR, IP address, authentication data. Database description DBD. It is the OSPF routes of the router. This contains topology of an area. Routing domain. Link state request LSR. When a router receives DBD, it compares it with its own DBD. Database description. If the database description received has some more updates than its own DBD, then LSR is being sent to its neighbor. Link state update. When a router receives LSR, it responds with LSU message containing the details requested. Link state acknowledgement. This provides reliability to the link state exchange process. It is sent as the acknowledgement of LSU. लिंक स्टेट अपडेट की acknowledgement होती है लिंक स्टेट acknowledgement के अंदर. What are different OSPF messages and timers? Continued. Link state advertisement LSA. It is an OSPF data packet that contains link state routing information shared only with the routers to which adjacency has been formed. Note: link state advertisement and link state acknowledgement both are different messages. लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट एक अलग चीज़ है और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट एक सेपरेट चीज़ है. Now OSPF timers. Hello timer. The interval in which OSPF router sends a hello message to an interface. It is 10 seconds by default. Dead timer. The interval in which the neighbor will be declared dead if it is not able to send the hello packet. It is for 40 seconds by default. It is usually 4 times the hello interval but can be configured manually according to need. अच्छा, तो ये टाइमर जो होते हैं ये डिफ़ॉल्ट टाइमर्स हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको कॉन्फ़िगर करके हम चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर OSPF टर्म्स, जिसके अंदर हमारे पास ये 4 चीज़ें आती हैं. एक तो आती है राउटर आईडी. इट इज़ द हाईएस्ट एक्टिव IP एड्रेस प्रेजेंट ऑन द राउटर. First highest loopback address is considered. If no loopback is configured, then the highest active IP address on the interface of the router is considered. अच्छा, राउटर आईडी और राउटर का अपना जो IP एड्रेस होता है ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज ना होइएगा. राउटर प्रायोरिटी. It is a 8-bit value assigned to a router operating OSPF used to elect DR and BDR in a broadcast network. Designated router DR. It is elected to minimize the number of adjacency formed. DR distributes the LSAs to all the other routes. DR is elected in a broadcast network to which all the other routers share their DBD database description. In a broadcast network, router requests for an update to DR and DR will respond to that request with an update.
backup designated router BDR. BDR is backup to DR in a broadcast network. When DR goes down, BDR becomes DR and performs its function. DR and BDR election. DR and BDR election takes place in broadcast network or multi-access network. Here is the criteria for the election. Router having the highest router priority will be declared as DR. If there is a tie in router's priority, then highest router ID will be considered. First highest loopback address is considered. If no loopback is considered, then the highest active IP address on the interface of the router is considered. तो इस तरह से हमारा इलेक्शन होता है DR के अंदर और BDR के अंदर कि किस राउटर का रोल DR होगा और किस राउटर का रोल BDR होगा. तो ये उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं. हाउ नेबरशिप इन OSPF है फॉर्म. देखिए रिप के तो हम क्या करते थे कि हम अपने नेटवर्क्स उसको बता देते थे और दूसरे जो एंड पे राउटर होता था वो उसके पास भी अपने नेटवर्क्स उसको पता होता था. तो दोनों साइड के ऊपर हमारा रिप कॉन्फ़िगर हो रहा होता. लेकिन इस OSPF के अंदर हमें कुछ एडिशनल चीज़ें अपने राउटर को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जिससे वो नेबर राउटर के साथ OSPF का लिंक अपना अप कर लेता है. To form neighborship in OSPF, there is criteria for both the routers. It should be present in same area. Routers ID must be unique. Router ID किसी भी दो राउटर की राउटर ID सेम नहीं होनी चाहिए और राउटर ID और राउटर का जो अपना IP एड्रेस होता है वो दोनों सेपरेट चीज़ें हैं. Subnet mask should be same. Hello and dead timer should be same. Stub flag must match. ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच. अच्छा ऑथेंटिकेशन इसमें इस तरह से होती है कि देखें बहुत सारे अगर हमारे पास काम कर रहे होंगे राउटर्स और पॉसिबल है कि एक ही एरिया के अंदर हमारे पास 3 4 5 किस्म के राउटर हो. ऑथेंटिकेशन उसमें ये काम करती है चूँकि ये देता है ट्रिगर्ड अपडेट. जब भी नेटवर्क में कोई अपडेट आएगी तो ये अपने नेबर को बता देगा कि ये अपडेट आई है. तो हम ऑथेंटिकेशन सेट कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी और राउटर की इन्फॉर्मेशन जो हमने अपने इस राउटर में ऐड नहीं करनी वो भी हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाए या हमारे राउटिंग टेबल के अंदर उसका भी एक राउट ऐड हो जाए. ठीक है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने से और हैकिंग से बचने के लिए हम ऑथेंटिकेशन सेट कर लेते हैं. अब जो पैकेट लेके आ रहा होगा अपनी अपडेट उसके साथ एक ऑथेंटिकेशन का टैब भी होगा. अगर वो ऑथेंटिकेशन आपके नेबर के साथ मैच करती है तो फिर वो राउट उसमें ऐड होगा वरना वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. OSPF supports null, plain text, MD5 authentication. Note: both the router's neighbors should have same type of authentication enabled. Example: if one router has MD5 authentication enabled, then the other should also have MD5 authentication enabled. देखें दोनों के पास अगर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं वो तो दोनों के पास सेम होगी. अगर सेम नहीं होगी तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. What are states in OSPF? OSPF states the device operating OSPF goes through certain states. These states are down. In this state, no hello packets have been received on the interface. Note: the down state doesn't mean that the interface is physically down. Here it means that OSPF adjacency process has not started yet. Int or initialization. In this state, hello packet have been received from the other router. Two-way. In the two-way state, both the routers have received the hello packets from other routers. Bidirectional connectivity has been established. Bidirectional होता है कि आप सेंड भी कर रहे हो और रिसीव भी कर रहे हो. Note: in between the two-way state and X start state, the DR and BDR election takes place. इसके अंदर टू-वे के अंदर जब ये स्टेट हो रही होती है तो उसके अंदर DR और BDR के इलेक्शन भी हो रहे होते हैं अपने पास. EX start. In the state, null DBD are exchanged. In the state, master and slave election take place. The router having the highest router ID becomes the master, while other becomes the slave. This election decides which router will send its BDR
DBD first. Routers who have formed neighborship will take place in this section, in this election. Exchange. In this state, the actual DBDs are exchanged. Loading. In this state, LSR, LSU and LSA link state acknowledgement are exchanged. Important. When a router receives DBD from other router, it compares its own database description with the other router's database description. If the received database description is more updated than its own, then the router will send LSR to the other router stating what links are needed. The other router replies with the LSU containing the update that are needed. In return to this, the router replies with the link state acknowledgement full. In this state, synchronization of all the information takes place. OSPF routing can begin only after the full state. یہ ہماری لاسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے فل اسٹیٹ. فل اسٹیٹ کے بعد ہمارا راؤٹر دوسرے نیبر راؤٹر کے ساتھ کمپلیٹلی سنک ہوتا ہے اور ورک کر رہا ہوتا ہے, اور ہم اس کو پنگ کر کے اور ہر طرح سے پیکٹ سینڈ کر کے ریسیو کر کے چیک کر سکتے ہیں. اس اسٹیٹ کے اوپر آ کے ہمارا راؤٹر فلی فنکشنل ہو جاتا ہے. نیکسٹ, واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف او ایس پی ایف. ہمیں او ایس پی ایف کی ضرورت پڑی ہی کیوں, جب ہمارے پاس اسٹیٹک راؤٹنگ بھی تھی, ہمارے پاس رپ بھی تھا. آپ کو میں نے ڈے 10 کی ٹریننگ سیریز میں اور رپ کی ٹریننگ سیریز میں آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ رپ کے اندر لمیٹیشنز ہے ہاپس کی, اس میں آپ ان لمیٹیڈ راؤٹرز نہیں ڈال سکتے, جبکہ او ایس پی ایف کو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا کہ اس کے اندر کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. آپ جتنے مرضی چاہیں آپ اس میں راؤٹرز ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنا نیٹ ورک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. او ایس پی ایف سپورٹس provides advantages. Both IPv4 and IPv6 routed protocols, آپ اس میں IP version 4 اور IP version 6 ان دونوں کو یوز کر سکتے ہیں. Load balancing with equal cost routes for same destination, ہم اس میں load balancing بھی کر سکتے ہیں. VLSM and route summarization بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں. Unlimited hop count, سب سے بڑا ایڈوانٹیج. Triggered updates for fast convergence, ہم اس میں ٹریگرڈ اپڈیٹس دے سکتے ہیں, اور اس کے اندر ٹریگرڈ اپڈیٹس کا کانسیپٹ ہی ہے. A loop free topology using SPF algorithm, اس کے اندر ہمارا کوئی لوپ نہیں بن سکتا. ریپ میں اکثر ہمارا کوئی لوپ بننے کے چانسز ہوتے ہیں یا بن سکتا ہے, لیکن او ایس پی ایف کے اندر ہمارا لوپ نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کے پاس اس نے ملٹیپل پاتھ اس کے پاس ہوں گے, جس میں سے اس نے ایک پاتھ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اسی کو اس نے کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے. اس میں لوپ نہیں بن سکتا. رن آن آلموسٹ آل راؤٹرز, یہ ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے او ایس پی ایف. ایسا نہیں کہ صرف سسکو کے پاس ہوگا تو جونیپر کے پاس نہیں ہوگا, یہ ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے, تو یہ آلموسٹ آل راؤٹرز کے پاس یہ او ایس پی ایف چل سکتا ہے. دیر آر سم ڈس ایڈوانٹیجز آف او ایس پی ایف لائک اٹ ریکوائرز ایکسٹرا سی پی یو پروسیس ٹو رن ایس پی ایف الگوریدم, ریکوائرز مور ریم ٹو اسٹور ایڈجنسی ٹپالوجی and more complex to set up and hard to troubleshoot. اچھا, اب یہ ہارڈ ٹو ٹربل شوٹ آپ نے اس سینس ہمیں نہیں لے کے جانا کہ ہم اس کو ٹربل شوٹ کر ہی نہیں سکتے. ہارڈ ٹو ٹربل شوٹ کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اس کی نالج ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایرر اکر ہو رہا ہے یا اگر نیبرشپ فارم نہیں ہو رہی تو نیبرشپ فارم کرنے کے ایلیمنٹس کیا ہیں. کیونکہ دیکھیں رپ کے اندر یہ کام تھا, رپ کے اندر اتنے کنسیپٹس نہیں تھے ہمارے پاس. رپ میں تو یہ کہ جسٹ آپ نے اپنے نیٹ ورکس اس کے اندر ایڈ کر دیے اور آپ کا اس راؤٹر کے اندر ریپ کام کرنا سٹارٹ کر دیا. دوسرے راؤٹر میں بھی آپ نے اس کے اپنے نیٹ ورکس آپ نے ایڈ کروا دیے اور وہاں پہ بھی ریپ کام کرنا سٹارٹ ہو گیا اور یہ دونوں راؤٹرز آپس میں سنک ہو گئے. لیکن اس کے اندر ہمیں راؤٹر آئی ڈی دیکھنی پڑے گی, ہمیں آئی پی ایڈریسز دیکھنے پڑیں گے, ایریاز دیکھنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے. تو جس کے پاس کانسیپٹ ہوگا, جس کے نے پڑھا ہوگا, جس کا ہینڈز آن لیب سیٹ ہوگا, تو وہ اس کو بڑے آرام سے ٹربل شوٹ کر سکتا ہے, کیونکہ ہر ایلیمنٹس کو چیک کرنا پڑے گا. جو ایلیمنٹ بیچ میں سے پرابلم کر رہا ہوگا یا جس کے اندر کوئی ایشو ہوگا, اگر ہم اس ایلیمنٹ کو سالو کر دیں گے تو ہمارا راؤٹر دوبارہ سے او ایس پی ایف کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دے گا دوبارہ سے. اور اس کو ریم چاہیے ہوتی ہے. اب ریم کا مطلب دیکھیں, جو رپ ہے, رپ بڑا
सिंपल सा प्रोटोकॉल है। लेकिन OSPF में चूँकि चीज़ें ज़्यादा हैं तो इसको प्रोसेसिंग भी चाहिए, इसको रैम भी इससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन चल ये सब पे जाएगा। लेकिन अगर रैम आपकी ज़्यादा होगी तो ये एफिशिएंटली काम करेगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। ये एक प्योरली थेरेटिकल वीडियो थी OSPF के ऊपर। नेक्स्ट के अंदर हम OSPF की लैब करेंगे, उसके अंदर आपको जितनी इसकी टर्म्स हैं, किस तरह से नेबरशिप फॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से उस नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि सिंगल एरिया क्या होता है इसके अंदर, और मल्टी एरिया क्या होता है, BDR कौन सा राउटर होता है, DR कौन सा राउटर होता है, बैकबोन एरिया क्या होता है और किस तरह से उसका फंक्शन होता है इसके अंदर। सो इस वीडियो में हमने आज देखा इंट्रोडक्शन टू OSPF, डिफरेंट राउटर टाइप्स इन OSPF, और हमने देखा कि डिफरेंट OSPF के मैसेजेस क्या होते हैं और टाइमर्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि OSPF टर्म्स कितनी होती हैं और क्या होती हैं, और फिर हमने ये देखा कि नेबरशिप कैसे हम फॉर्म करते हैं OSPF के अंदर, और फिर हमने ये देखा कि OSPF की कितनी स्टेट्स होती हैं, और फिर हमने कुछ एडवांटेजेस इसके देखे OSPF के, और कुछ हमने इसकी लिमिटेशंस भी देखी OSPF की। सो दिस इज़ द एंड। और अपकमिंग टॉपिक के अंदर हम OSPF सिंगल एरिया की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम एक लैब करेंगे जिसके अंदर सिंगल एरिया ज़ीरो होगा सिर्फ इसके अंदर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। If you like this video, subscribe our channel, post your valuable comments, like our video and share it among your friends and family. You can contact me at my Facebook, my personal WhatsApp, my email address, my YouTube channel by posting your valuable comments, and on my Skype. So thanks a lot for watching, stay tuned, and if you haven't subscribed our channel, click the subscribe button and press the bell icon to get the latest notifications from our channel. Thanks a lot. We'll see you in the next video.